हम लोग अब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि एज्योर एआई सर्विसेज को हम लोग कैसे अपने कोड में यूज़ करेंगे, कैसे उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट वी शुड हैव एन अकाउंट ऑन द एज्योर पोर्टल। एंड यस, जब मैं एज्योर पोर्टल पे बात कर रहा हूँ तो एवरीबडी हैव अ क्वेश्चन दैट इट इज नॉट समथिंग दैट इज फ्री। So if you create a one account, obviously you are going to get a 1 month trial period with some balance around 2000 rupees or 1800 rupees like that. मैं उसके लिए भी सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि that will be very slow. Okay, and when you go with the pay as you go service, actually it doesn't cost you much. So I will suggest you to go with the pay as you go service, and it will hardly cost you 50 rupees, 100 rupees like that. It won't cost you much. Okay, and even I don't think that you will be charged that much also. It is because for 12-month period you will get bunch of free services that we are going to use in this only. So go with it, learn with it, because nothing is free. Come here, even if you want to use your client machines or office IDs, and if you are able to use your Azure Open AI services, that is very good. Otherwise you can't use those things because you are not allowed to do those things on your company's portal or company's account. So I will suggest you create your own account, go with the pay as you go services. चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग अपना सर्विसेज बनाते हैं। तो सर्विसेज दो टाइप का होता है। एक अपना सर्विसेज होगा सिंगल सर्विस रिसोर्सेज और एक मल्टी सर्विस रिसोर्सेज। सिंगल सर्विस रिसोर्सेज में क्या है कि एक सर्विस आपका डिफाइंड होगा पर्टिकुलर एक काम के लिए। जैसे आपका एआई लैंग्वेज का सर्विस एआई लैंग्वेज के लिए यूज होगा, एआई विजन का सर्विस एआई विजन के लिए यूज होगा। मल्टी सर्विसेज क्या होता है, वो जो एक ही सर्विस आपका मल्टीपल थिंग्स को कवर कर लेता है। तो दैट आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स related to the service that we should be aware of. And another thing is endpoint and keys क्या होता है। So जब हम लोग Azure AI सर्विस क्रिएट करते हैं तो उसी वक्त हम लोग अभी देख लेंगे। तो अपना फर्स्ट टास्क है कि एक Azure AI सर्विस क्रिएट करते हैं और उस सर्विस को हम लोग कंज्यूम करेंगे अपने कोड में। कोड का क्या काम होगा, कोड में हम लोग उस सर्विस को यूज करके, उस AI सर्विस को यूज करके डिटेक्ट करेंगे वॉट एवर द वर्ड वी आर पासिंग थ्रू द कोड, इट विल डिटेक्ट द लैंग्वेज, विच लैंग्वेज इज इट, द वर्ड सिग्निफाइज इट for it, or it is very limited currently, but whatever the things are available for us, so we will consume it and we will see how that code will effectively work. So main purpose है अपना create an AI resource, AI Azure service here, and consume it in the code, in the local code. So first we have to create a resource. So creating a resource, we have to search Azure AI services. So we will be, when we search on the create resource and when we come here, so we will be getting this Azure AI services. We will click it here and we don't have to do anything. In drop down we are not going to get anything. So हम लोग यहाँ पे create button पे click करते हैं. So now before coming to here, you must have one resource group that if you Google it also, if you watch some other YouTube videos, so you will be able to know how you can create a resource group. Like जब आप initially आप अपना account create करोगे ना, उसी वक्त आप you will be able to ask to create a resource group to use any functionalities. Okay, so I have a resource group, Deepankar Devrat -RG. This is my one resource group that I use everywhere. And one more thing, ये जो Azure AI services है, it is limited to very specific region currently. If you choose your India and all, so that won't work, Asia region and all. So pretty just to learn perspective, choose East US region. Now name, you have to choose a very specific unique name. So I will go through with Deepankar Devrat 1998. Okay, I think that should work. Yes. So now this name is unique. Now pricing tag standard is 0. See, this is paid service. Okay, I'm using a pay as you go service, but still I'm getting some services that are free to use to learn something. So don't worry, go with the pay as you go service. Till now अगर आप ट्रायल वर्जन यूज करो, जब तक आपका 1 मंथ का चल रहा है तब तक आप यूज करो. आफ्टर दैट go blindly go with the pay as you go service, and yes, use it responsibly. ऐसा नहीं कि कुछ heavy आप यूज कर रहे हो, so otherwise you will be charged very heavily for that. But for basic purpose, to learn and all, to create resource, how it works and all, I don't think you should need that thing. You can pretty much go with the pay as you go service. Yeah. So pricing type standard is 0, and check this checkbox. So you will be able to create Azure AI service. Now we have done everything for this page. Click on review plus create. So it should create. Yes, see, if you go with the trial version, it will take lots of time for you. So now the deployment is under the progress. So once it is deployed, you will get a message
that it is deployed successfully. And once it is deployed, you will be able to see your endpoints and key, which is the main thing, which is very important thing that will connect your application, that will connect your code with this service to use in your code. So our deployment is succeeded, so we will be going to the go to resource, and when you click over, so see whatever things we have created, all the details will come here in the overview. So resource group, the resource group that I have chosen at the time, जो resource group मैंने उसमें choose किया था, location, this will be subscription ID, and there is no issue with that. I'm just showing you for this trial version after for this demo purpose, and after that I will delete this account, so no issue with that. That I'm displaying those important details to you. Yeah, so the subscription ID, and this is the endpoint for this resource. So now if you go to the keys and endpoints, you will be able to see key 1, key 2, दिस लोकेशन रीजन एंड इन पॉइंट। नाउ सी, ये जो दो की है हम लोग के पास, यही दो की हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग का एप्लीकेशन को कनेक्ट करेगा इस सर्विस से। एंड दिस सर्विस, दिस इज अ मल्टी सर्विस। ये सर्विस, ये जो की है, ये जो लिंक है ना, दीपांकर जो 99 कॉग्निटिव सर्विसेज.com, थ्रू दिस यू कैन यूज विजन आल्सो, यू कैन यूज टेक्स्ट, अदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज आल्सो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मल्टी सर्विसेज। इफ यूज सिंगल सर्विसेज, तो सिंगल सर्विस में आपको एक एक करके अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, एज पर एक एक करके आपको सर्विस बनाना पड़ेगा ना, एज पर दैट यू आर गोइंग टू कंज्यूम दैट। ओके, now you must have a question in your mind that why we have two keys, what is the importance of this key 1 and key 2? See, the importance of the key 1 and key 2 is that, let us suppose a scenario कि आप प्रोडक्शन में आपका एक एप्लीकेशन है। नाउ एक प्रोडक्शन में एप्लीकेशन में आपका लेट अस सपोज आपका की 1 एक्सपोज हो गया है बाहर, वल्नरेबल हो गया है, समवन हैज एक्सेस टू द की 1, और लेट अस सपोज यू हैव अ पॉलिसी इन योर कंपनी वेयर यू हैव टू अपडेट योर की इन 3 months। सो इन दैट केस, लेट अस सपोज यू हैव ओनली वन की। सो जब तक आप, मान लो एक ही की आपके पास, जब तक आप की चेंज करोगे, डिप्लॉय करोगे, उतने देर में आपका एप्लीकेशन कंप्लीटली डाउन रहेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव अ की 2। नाउ इन दैट केस, टिल नाउ जब तक आप रीजनरेट करोगे की 1 और आप उसको आप जब अपडेट करोगे, तब तक आप की 2 यूज करो अपने एप्लीकेशन में। ओके, एंड वंस दैट इज डन, सो दैट्स व्हाई दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस की 1 and की 2 is there। Okay, so that let us suppose any such scenarios happen, so you can consume anything, and there is no difference between key 1 and key 2. Both are completely different, and both have the same use. You can use either key 1 or key 2 blindly for any consuming of such services। ठीक है, तो अपने को चलते हैं। तो अपना ये सर्विस क्रिएट हो गया है। अब मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, बट टू शो यू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दोस थिंग्स, सो आई विल क्रिएट one more thing. Once you are going to learn about this Azure AI services, I will suggest you to go with the .NET 6. I don't think the older version will be much compatible with these keys, and I think it will throw, maybe some packages will throw you errors and all. Okay, so that's why I'm suggesting you to go with the latest stable versions and all. So for this I will be using command prompt application. So let us suppose, let me create a new project. So console application I'm going to create, that will be based on C#. Yeah, so we are, let me create with detect language is the project name. Okay, yeah, next, and I will be using latest .NET 6.1 long-term support. So this one I'm going to use. You can use, I think, .NET 7 also, that will also work. Now in the program.cs I have already a code. I will show you that thing. And one more thing, the code that I'm using, these codes are from the exercise of Microsoft only. Okay, so this is nothing. I'm not calling that I have written all those things. So, but these are from the exercises of Microsoft only, and we are using those documents and all for our learning purposes. Okay, so this is the program.cs file, and what is the use of it, I will show you. So now I will share you this document file link also, so no worry on that in the description. Yeah, so if you see there, we are getting 2 errors, Newtonsoft.json on Microsoft extension.configuration. These packages are not available. So first we are going to install these packages. So let's go there and search for Newtonsoft. I think we are getting it. Yeah, this is the project that I am selected, latest stable version 13. This one, and let me install it. Then next we are going to use
Microsoft extension dot configuration JSON. This package we need to install. Why? Because we are using this extension method for it. Because it won't detect the add JSON file. This is the extension that comes under this library, this Nugget package. So we will be installing this also. The latest stable version available is 8. So let's install this also. Okay. I think till when it will be installed, I think it is installed now. Yeah. So all the errors are gone now. Now if you see, we are consuming some endpoint and key from the app setting.json file. Where is this app setting.json file? Usually if you see .NET MVC projects and all, these app settings.json file used to be placed in this project outside the one, but now this exposes this security risk. So it is suggested to create an application in such a way this app setting.json file should be under the bin file. So we are going to directly place that thing to the bin file only, to the bin file, so that हम लोग मतलब जब भी ऐप सेटिंग डॉट जेसन जब भी यूज़ करते थे एमवीसी ये सब है तो बाहर हम लोग यूज़ कर सकते थे, लेकिन होता क्या है कि उसमें बहुत सारा सिक्योरिटी डिटेल्स रहता है, जैसे सीक्रेट की रहा और इन पॉइंट्स ये सब रहा, तो इट विल बी एक्सपोज्ड आउटसाइड। सो इसके लिए क्या है कि अब सजेशन आता है, सजेशन ही सजेस्टेड है कि बिन फोल्डर में आप लोग यूज़ करें। अब बिन फोल्डर में यूज़ करेंगे तो फिर लेटर सपोज इन द फ्यूचर इफ समथिंग डिटेल्स आर गोइंग टू बी अपडेटेड, सो वी शुड मेक श्योर, हम लोग को ये मेक श्योर करना होगा कि कोड को ऐसा रखना होगा कि अपना बिन फोल्डर शुड ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल का बिन फोल्डर में जो फाइल है वो भी अपडेट हो जाए विद द न्यू डिटेल्स। ओके, सो सेम थिंग वी आर गोइंग टू यूज इट हेयर। Let me copy this file. I have one. I will show you how this works actually. So let me go to this file location. There is a bin folder, there is a debug folder in the .NET 6.0. Here you have to place this file and let's open it. So now what we have to do, we have to place, let me open this one in Visual Studio Code. विजुअल स्टूडियो कोड में आप कैसे अब इसको खोलेंगे ये भी आप मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है, बस विजुअल स्टूडियो कोड विल बी मच इजियर टू व्यू ऑल दोस फाइल्स, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ओपन दिस इन। सो जहाँ पे आपका फाइल, जहाँ से आपको विजुअल स्टूडियो को खोलना है, जहाँ पाथ से आप लोग खोलना है, यहाँ पे आप क्या करो, cmd टाइप करो, इट विल ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, टाइप कोड स्पेस डॉट, अब ये आपका सारा फाइल्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम डॉट फाइल cs आ गया, बिन फोल्डर में अपना ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल भी आ गया। अपने को क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, इसको अपडेट करना है जो हम लोगों ने अभी क्रिएट किया है। ओके, तो अपना की है ये, इसको कॉपी कर लेते हैं और इस की को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये अपना की हो गया और अपना इंड पॉइंट क्या होगा, इंड पॉइंट ये हो, यही इंड पॉइंट के थ्रू से, इंड पॉइंट मतलब जो यूआरएल अपना बनेगा, इसी के थ्रू से वो यही सर्विस का लिंक है जो अपना यूज होगा इस लैंग्वेज डिटेक्शन को यूज करने में। ठीक है, तो अपना सर्विस इंड पॉइंट और ये दोनों अपडेट हो चुका है। सो हम लोग का ऐप सेटिंग डॉट जेसन में यहाँ पे फाइल हम लोगों ने अपडेट कर दिया है और ये अपना प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है। ठीक है, ओके, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये अपना सारा फाइल यहाँ पे अपडेट हो गया। देखो क्या होता है यहाँ पे, ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में यहाँ पे अपना सर्विस इंड पॉइंट है जो हम लोग का यूआरएल जो सर्विस से कनेक्ट करेगा, और एआई सर्विस की है, यही सर्विस हम लोग का की है जो सिक्योरिटी की है, जिसके कारण ऑथेंटिकेशन ना हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ये अपने को अलाउ करेगा इस प्रोग्राम डॉट सी एस को कनेक्ट विद दिस एज्योर एआई सर्विसेज दैट वी हैव क्रिएटेड इट हियर। ओके, नाउ तो हम लोग नीचे आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐप सेटिंग जेसन को ये बिल्डर में कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर उसका बनाना है बिल्डर फॉर्म में, और इसको हम उसका बिल्ड आई कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड का हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाना है और उस बेसिस पे उसका हम लोग सर्विस इंड पॉइंट और सर्विस की हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो नाउ हम लोग क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे स्टार्टिंग में। लेट मी शो यू हाउ दिस कोड इज गोइंग टू वर्क, देन यू विल हैव अ गुड आइडिया दैट व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। तो अगर आप लेट मी ओपन दिस टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, एंड go to, let's choose command prompt, let me compile this program .NET run, and if you see I am getting a prompt that enter some text. Let us suppose I am writing hello, तो देखो अब हेलो लिखा, ये ऑटो डिटेक्ट किया द लैंग्वेज इज इंग्लिश, एंड अगेन दिस लूप इज स्टार्टेड।
सो दिस कोड इज टेलिंग दैट थिंग, जब तक मैं क्विट और या नहीं लिखूंगा तब तक ये कोड रुकेगा नहीं. सो दैट इज दिस इज at for loop. Until unless I'm not going to write a quit, it will again ask me to enter the word when I'm writing the quit. So this code is ended. So this is that code. Okay, ये वही बोल रहा है. So now इंटर सम टेक्स्ट. अंदर जब आप आओगे तो ये एक लैंग्वेज मेथड है जिसको ये कॉल कर रहा है. लेट अस चलो हम लोग देखते हैं कि ये लैंग्वेज मेथड बोल क्या रहा है. गेट लैंग्वेज व्हाट दिस मेथड इज डूइंग एक्चुअली. तो यहाँ पे सारा हम लोग का एआई रिलेटेड सर्विसेज कंज्यूम हो रहा है और यूज हो रहा है. तो यहाँ पे हम लोग ने जो भी यूजर टेक्स्ट पास किया, जैसे कि मैंने अभी हेलो पास किया, तो हेलो एज ए इंग्लिश, तो हेलो जो वर्ड है वो इस मेथड में आएगा. नाउ उसको जेसन बॉडी में कन्वर्ट करेगा. इट विल गिव अ आईडी दैट व्हाट इज द आईडी ऑफ दैट टेक्स्ट. आईडी एज अ वन दैट पैरामीटर लाइक प्रॉपर्टी में इसको डिफाइन करके बॉडी में, और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में इसको डाल के एरे बना के उसके बाद हम लोग इसको भेज रहे हैं जेसन बॉडी में. तो अब क्या होगा, UTF-8 में हम लोग को कन्वर्शन करना है. UTF-8 इज द स्टैंडर्ड वन, जैसे सारे लैंग्वेज को डिटेक्ट करना, ASCII वैल्यू, और इट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड ऑल. सो दैट्स व्हाई इट इज always suggested to go with the UTF-8 encoding. So that's why we are converting it to UTF-8, और उसके बाद इसको कन्वर्ट करके तो हम लोग इसको यूज करेंगे. अब देखो इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल में हम लोग को नहीं घुसना है. ये प्रीटी मच डिफाइन चीज है, और जब भी आप कंसोल एप्लीकेशन के वे में आप जा रहे हो, यू कैन यूज दो थिंग्स, एंड दीस कोड्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म. तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ रट्टा मारना है. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द स्टेप्स इज गोइंग टू डू एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड. तो जब आप आगे आते हो तो उसके बाद फिर ये आपको क्या बोलता हूँ कि जो भी आपने दिया है डेटा, और जो भी डॉक्यूमेंट ये बना है यहाँ पे, उसको एक बार प्रिंट कर देगा. दैट वी विल सी. जो प्रिंट यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही मैंने इंग्लिश में ये लिखा हेलो, सो इट प्रिंटेड दिस वन. सो दिस कोड इज डूइंग दैट पार्ट. This console utility, this is doing that part, this one. Okay, this object is getting printed here, this highlighted. अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग HTTP क्लाइंट. अब हम लोग क्या करना है, कॉल करेंगे हम लोग सर्विस को कॉल करेंगे, हिट करेंगे. उसके लिए हम लोग HTTP रिक्वेस्ट के लिए ऑब्जेक्ट बनाने, तो रिक्वेस्ट हम लोग भेजेंगे. अब उस रिक्वेस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना सर्विस की हेडर में ही डाला जाता है सर्विस की, और सर्विस के रिलेटेड जो भी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होता है वो हेडर के थ्रू से ही होता है. हम लोग जानते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के थ्रू में. तो अगर नहीं भी जानते हो तो आपको ये कोड दो, आप समझ जाओगे एग्जैक्टली होता है. इफ यू आर कॉलेज स्टूडेंट, सो यू विल गेट अ प्रीटी मच आइडिया इन योर नेटवर्किंग क्लास. सो ये कैसे कॉल्स काम करते हैं. सो no need to go in depth for that until unless you are not from a networking background. Okay, so हम लोग क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम लोग क्लाइंट उसका क्लाइंट बनाएंगे और रिक्वेस्ट भेजेंगे, जिसमें हम लोग पैरामीटर में अभी करेंटली हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग भेज रहे हैं. उसमें क्या करेंगे, हम लोग अपना सब्सक्रिप्शन की डालेंगे, and then we will define our URL. What will be the URL? URL will be the service endpoint. यही सर्विस एंड पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये पूरा की. और हम लोगों ने बोला है कि हम लोग ने मल्टी सर्विस यूज कर रहे हैं. जो हम लोग एज्योर पे सर्विस क्रिएट किए हैं, ये मल्टी सर्विस है, नॉट अ सिंगल सर्विस. तो ये हम लोग अब इसमें क्या करें, ये सर्विस एंड पॉइंट डालें, और इसके एंड में हम लोग अपेंड कर रहे हैं व्हाट मेथड वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू यूज द सर्विस ऑफ टेक्स्ट एंड टेक्स्ट एनालिटिक्स. वी आर गोइंग टू यूज एनालिटिक्स में क्या करने जा रहे हैं, हम लोग डिटेक्ट करने जा रहे हैं कि व्हाट लैंग्वेज द वर्ड पास्ड इज. ओके, यही हम लोग का मोटिव है. एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज AI सर्विस अवेलेबल. ओके, तो यही हम लोग का AI एंड पॉइंट है. तो इसमें अपना जो URL भेजा है, उसके बाद हम लोग ये अपेंड करेंगे टेक्स्ट एनालिटिक्स, व्हाट इज द वर्जन ऑफ दैट, वर्जन 3.1, एंड लैंग्वेज दैट वी हैव टू डिटेक्ट. एंड दिस इज द क्वेरी स्ट्रिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी द पास्ड. ओके, that will be passed. So this is whole response will be getting created here. So now हम लोग response भेजेंगे, and we will send the not response भेजेंगे, we will send the request, and then we'll get the response from this Azure AI service that we have created here. Okay, so जब हम लोग जाएंगे, तो let us suppose if the status code is not equal to 201, that is okay, then it will not play and it will give you the error, whatever the error you are going to get.
ओके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एरर कैसे हम लोग को मिलता है। तो अब लेटर सपोज हम लोग का स्टेटस रिस्पॉन्स सही है, हम लोग का सर्विस इसको अच्छा से हिट कर रहा है, सो इन दैट केस इट विल गो इनसाइड, it will collect the response, it will print the result whatever the in the document for whatever the response that we are going to get, that will be in the document format only. If you see, we have created a property here in the document format only, so similarly we are going to get a response in the document format only, and within the document there will be a property called detect language, and within the property there will be array, there will be array that name will be the detect language, and within that array there will be another name of that within that again there will be a looped array within that multi array that you can call a multi property within that will be name, and that name will contain the value that what language is it, okay, the name of the language that is detected for it, and then your language will be printed. So similarly let's run this application again. So नाउ देखो, अब हम लोग से पूछ रहा है क्या लैंग्वेज क्या इसमें लिखूं, तो पहला हम लोग लेटर सपोज इंग्लिश से ट्राई करते हैं, तो लेट मी राइट लेट मी गो विद ऑल थिंग hello. So I have written hello and now we will get that as a response. तो मैंने आपको बोला था रिस्पॉन्स हम लोग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मिलते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट को भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ लाइन नंबर 92 में, so that's why we are getting a response in this format also. So ID1 detected language, we have got detected language. See as a proof, see ये पूरा ऑब्जेक्ट मैं प्रिंट कर रहा था ID1, इसके अंदर एक डिटेक्टेड लैंग्वेज एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अंदर एक और प्रॉपर्टी है कॉल्ड नेम, और उस नेम का क्या है, वो डिटेक्ट किया कौन सा लैंग्वेज, इट इज डिटेक्टेड एज इंग्लिश। अंडरस्टूड? अब आते हैं, इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से अंदर हम लोग क्या किए, देखो फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से लोग प्रिंट कर रहे हैं कि ये समझने का कि ये डिटेक्ट लैंग्वेज हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो देखो इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट मिला, डॉक्यूमेंट के अंदर डिटेक्ट लैंग्वेज है, डिटेक्ट लैंग्वेज के अंदर एक प्रॉपर्टी है कॉल्ड नेम, और उसको हम लोग यहाँ पे लास्ट में प्रिंट करेंगे, द लैंग्वेज इज नथिंग बट योर इंग्लिश, दिस इज इन कंसोल 97, एंड इफ यू कंपेयर दिस आउटपुट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज डूइंग। ओके, गॉट इट? let me try with some other word, gracias. I'm using those examples only that suggested by Microsoft. Okay, so now it detected that this language is Spanish, and in the same way you will get the language result. Let me write one more thing, bonjour, and it will be detected as a French. Okay, so this was how this language work, and how this code is working, and how we are consuming this Azure AI service. The main purpose of the main goal of this whole video lecture was that to show how we can create Azure AI services, and how we can consume that AI services to use to make our application more intelligent and more smart. Okay, let me quickly show you the one error part, how that error it will be thrown. So let me I'm changing my services key, and let me rebuild this application again, .NET run, and hello, and if you see we are getting the errors. What is the error? That this one rephrase, and in later you will get to know permission denied also, kind of things you will get error, and these are, yeah, we are getting this permission denied only. Okay, yeah, so I think we are pretty much clear with this exercise. This was all about in this lecture, and धीरे धीरे हम लोग आगे और भी बढ़ेंगे, इन डेप्थ जाएंगे सारे सर्विसेज को, विजन में बहुत सारे डिस्ट्रक्शन है, वी विल गेट मेनी एरर्स ओवर देयर। ओके, NLP यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंट एनालिसिस यूज करेंगे। सो या वी आर गुड विद दैट। टिल नाउ आई डोंट थिंक यू शुड हैव एनी डाउट, और इफ यू हैव एनी डाउट गो विद द गूगल, ask ChatGPT, or you are free to drop any comment over this video lecture. Yeah, thank you.